humiliated and beaten. A snarling, viral image of upper caste stomping the downtrodden in 21st century Gujarat. But an India Today investigation has found that the shocker goes well beyond these viral images from a few days ago. It runs much deeper than fitful assaults. A rare India Today probe shows the crime and the curse of untouchability remains ingrained in the land of the father of our nation, sanctified shockingly by modern religion. Posing as tourists, India Today's undercover reporters discover how Dalits are ostracized by religion itself. The Dalit alienation in Gujarat begins with religion. Ancient notions of pollution and purification continue to render them untouchables. Custodians of religion delve into wretched theories to treat Dalits as untouchables. Meek and powerless, the community surrenders to unconstitutional decrees and stays away from temples for fear of their safety. अभी जाऊंगा 5 इंसान का 5 लड़के खड़े होंगे मेरे को मारेंगे डांटेंगे बोलेंगे कि क्यों आ गए अंदर क्यों आया तू मंदिर में. Over the next 30 minutes, India Today uncovers it all on camera. A rare expose of religion relegating Dalits to third-class citizenry of our country. Keep watching Operation Untouchable. Terrifying, unforgettable images from the modern India we know so well. Protests raged across Gujarat after a group of Dalits were beaten viciously by a group of self-proclaimed Gaurakshaks or cow protectors. These are images that went viral in the news media and online. But what happened to those Dalits was only the tip of the iceberg. And that's why India Today sent out its own undercover reporting team to actually expose the reality of Dalits, a reality you're about to watch but will not possibly believe, captured on video. The Indian Constitution guarantees every citizen the right to pray, the right to enter any place of worship. What you're about to watch is the terrible reality of Dalits in India. Enduring the curse of their caste, almost 70 years after independence, the land of the father of our nation, Gujarat, has been jolted. But this curse is not limited to periodical physical abuse of this kind. An India Today investigation has found that Dalits in Gujarat are in fact consigned to violently segregated lives, a virtual apartheid in Gujarat and the rest of the country. But the spotlight first on one of the country's fastest growing model states. Posing as tourists, India Today's reporters discover untouchability in Gujarat has survived the constitutional ban and remains sanctified fearsomely by religion. Ancient notions of purity and pollution appear to be commonplace at several temples as Dalits are shunned to preserve the so-called piety of the faith's upper caste custodians. Sitting at the doorstep of this Kali temple are Dalits. They aren't allowed inside the sanctum. A separate vase is placed for them at the sill to take a tilak from. Priests will not touch them. आप टीका भी नहीं करोगे? कोई नहीं करता है। अच्छा, कोई टीका नहीं करता। सरस मंदिर जाऊं।
Between the doorway and the gods stands a firewall that Dalits cannot even think of crossing. They cannot even partake of prasad with others. It's delivered to them separately. All based on a wretched, ancient theory that stigmatizes Dalits as a burdensome contamination and exalts their isolation as purification. जो बता कर जाता है उसको नहीं जाने और जो फिर भी वो जाके माता के पैर छू छोले तो भी हमको पता चल रहा था तो माता जी को गंगा जल से साफ कर मंदिर को भी पवित्र करते गंगा जल से यहाँ पे हरिजन गए तो कुछ नहीं लेकिन अंदर जाए तो हरिजन You've just heard this temple's regular caretaker nailing it. The age-old prejudices built around purity. One set of people labeling the other contagiously toxic. मंदिर को भी पवित्र करते गंगा जल से यहाँ पे हरिजन गए तो कुछ नहीं लेकिन अंदर जाए तो हरिजन For these Brahmins, the Dalits are pariahs because of their occupations, such as leather work with cattle and menial jobs. They are also pariahs because of their birth. और जो ये धंधा नहीं करता हो वो भी नहीं जाते पता क्योंकि कुछ ना कुछ तो धंधा करता ही तो धंधा नहीं करता पड़ता हूँ तो भी वो मना Regardless of constitutional freedom and protection, Dalits in Gujarat remain stifled by religious sanctions, even at big tourist shrines like this one. Dalits are outcasts. हमारे गवर्नमेंट का नहीं आता कोई गवर्नमेंट ना आना कुछ Religious exclusion, Dalits have to maintain a distance even from God, let alone upper castes. Living in terrible poverty and humiliation, the community appears to have reconciled to unconstitutional decrees at the famous Nag temple in Unava, Gandhinagar. Dalit devotees arriving here do not cross their designated boundaries. They are rejected because of their bad karma. That's how temple elders here justify the Dalit apartheid. वो प्रसाद आके ले सकते हैं या हमें देना पड़ेगा? आप दे दो ना हम दे दें। आप साथ में दे दो वो नहीं आ सकता हमारे यहाँ वाले नहीं आते हमारे यहाँ के हैं हाँ। नहीं आते अच्छा, इस गांव के नहीं आ सकते। इनकी है तो मना है अच्छा इन देव की मना है अच्छा आवे तो इनका कर्म अच्छा Karma. That's how proponents of the caste system have portrayed stratification over ages. The top, so-called cleanest caste, the Brahmins, supposedly were born from the head of the creator. The bottom came from the feet, and the two cannot mix. So the temple caretakers defend alienation of Dalits as a divine order. कि मैं उनको कह रहा था चलो अंदर तो आ ही नहीं रहे अंदर नहीं आ कह रहे मना किया है अंदर आने से। मैं कह रहे मना किया है इनका मना इनकी है आप लोग की मनाई नहीं मना इनकी है इनका भी ये चमत्कार मिले ना जब पता पड़ता है सबको चमत्कार मिले ना जब भी पता पड़े तो यानी कि अगर ये हाँ, इनका चमत्कार है अगर ये लोग आएंगे तो उनके साथ बुरा हो जाएगा हाँ, बस अच्छा, समझ गए ऐसा होता है? बस हाँ चमत्कार है इनका इसी से आप जो नहीं आते You just heard how the so-called guardians of religion continue to perpetuate anti-Dalit prejudices on the ground. A low-caste worshipper waiting outside claims Dalits are forced out physically if they ever walk into these temples. Too meek to resist, they surrender to the pressure. India Today's special investigation team visits another temple,
This one's dedicated to Lord Ram. The priest here is blatantly outspoken. लेकिन को क्यों नहीं आने देते आप? एक वस्तु मानो आपका प्राइवेट घर है, उसमें आप हमको अलाउ करो ना करो। तो मानो आपका घर है, हमने पहले ही कहा आपके घर में हमको एडमिशन देना या ना देना आपकी इच्छा की बात है। An outrageous display of supremacy over faith, a methodical attempt in religion to keep Dalits out of the mainstream. Here in Gujarat and everywhere else in the country as well. Acts of violence against lower castes, when caught, are prosecuted, but not the discrimination that appears to be relentless in economically thriving Gujarat. This is our India. With Amit Chaudhary and Arun Singh across Gujarat, this is India Today's Special Investigation Team. Operation Untouchable has put out their voices and images never seen before of the kind of prejudice against Dalits that exists in this country. Temple priests we spoke to in Gujarat cite mythology and ancient culture to justify the fearsome discrimination. Dalits themselves believe it is so entrenched that they themselves believe they have no right to go anywhere near a temple. Our undercover reporters, in fact, even met a Dalit sarpanch of a village in Gujarat who was using her own personal money to build a temple. But once that temple was built, as you will see in this report, she couldn't even think of going anywhere near it. In a dusty corner of Rehmalpur village, on the outskirts of Gujarat's biggest city, Ahmedabad, this temple stands out. Because it's being built by a so-called lower caste woman, Pintu Ben, the Dalit sarpanch of this village. This middle-aged woman is using her personal savings to build this temple. So far, she says, she's spent 10 lakh rupees in its construction. कितना पैसा लग गया इस मंदिर पे? 10 लाख होगा। तो ये जो पंचायत को जो पैसा मिलता है उससे बना रही है, अपने पैसे से बना रही है? पंचायत में तो उतना करना रुपया काट करना। क्या कह रही हैं? उनके पैसे। उसके 35 बीघा जमीन है इसका। 35 बीघा जमीन है। इसकी खुद की जमीन है। इसकी जो निकल जाती है ना, उन्हीं से बनता है। अभी और 5 लाख हो जाएंगे, ऐसा अभी और 5। अभी जब प्रतिष्ठा होगा, जब सब समूह गाँव में खाना खिलाती है ना सब। तो 35 बीघा जमीन से जो उपज आता है सब आप दे देती हैं इनको, तो सब इस पे खर्च हो जाता है। सब खर्च यही बनाता है। मंदिर बनाने में गांव के किसी भी मंदिर में आप नहीं जा सकते। जो मंदिर आप बनवा रही हैं, तो क्या आपने क्यों बनवा रही हैं? जब आप उसमें जा ही नहीं सकती तो बनवा क्यों रही है? देश के તમને જઈ ના શકો તે મંદિર કેમ બનાવી રહ્યા છો? એ તો વસ્તીના એમ હતું કે અમે તમને વોટ આપી, તમે મંદિર બનજો, અમે બનાવી દઈશું, તમે મને વોટ આપો, આપ્યા સરતે પછી આપણે બનાવવું પડે. ભગવાનને બોલે આપણા બહારથી પગે લાગી તો અહીંયા છે મંદિર, તો નહીં બેઠા તો અહીંયા મંદિર તો અમારા દઈને જ આપણે ગમે તે મંદિર બેઠ પગે લાગવાનું તો અંદર જવી કે બહાર જવી, ભગવાન તો અહીંયા છે. The high symbolism of pluralism in faith is dead here. Like lakhs of her fellow Dalits, the irony for Pintu Ben is stinging. She cannot even think of entering the temple she's building with her own 2 hands. She's barred from the sanctum of this new shrine or any other house of worship in her village. Boundaries are earmarked even for this generous sarpanch for paying her obeisance. Her personal initiative aside, resistance to Dalits in religion is too stiff to fight. आप लोग का मन नहीं करता? इतना पैसा लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मन तो क्या है, पर काल પછી વિરોધ થાય। विरोध है? गांव में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, झगड़ा कौन करेगा? કારાવારી કોક એવા હોય હોમાં કે એ જયા મંદિર માં मंदिर अपड़ी जो भगवान अपड़ी जान। कौन करेगा झगड़ा? क्या बोल रही? कोई ना कोई बोलेगा ऐसा कि मान लो मैं गई तो उसने मंदिर को खराब कर दिया, उसको मंदिर में प्रवेश किया तो अशुद्ध कर दिया। Pintu Ben sums up the fears of Gujarat's Dalit community that's prohibited from regular religious practices. The state's low castes are now too scared to visit temples as it may infuriate the upper castes.
The fears appear to be as deeply entrenched as the discrimination itself, as India Today discovered, traveling from village to village. हम लोग कभी गए नहीं है मंदिर में। अच्छा। पर जाने से डरते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? डरना तो पड़ेगा ही। मैंने बोला आपको गांव के अंदर पावर इतना है। नहीं। मैं जाऊंगा मंदिर में, बराबर। अभी जाऊंगा, 5 इंसान का 5 लड़के खड़े होंगे, मेरे को मारेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे कि क्यों आ गए? हाँ, अंदर क्यों आया तू मंदिर में? अभी भी आप लोगों को जाना वहाँ अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। 1% आप चले गए, मान लीजिए कोई चला गया तो क्या होगा? मारा मारी होगी। वो उसको हाल ही मारेगा वहाँ मंदिर के पगत्ते में। मारते होंगे। हाँ, जबरदस्त मारेंगे। You just heard this Dalit man, Mukesh, at Votha village near bustling Ahmedabad claim upper castes turn aggressive if lower caste people dare enter their sacred sites. A woman Dalit confirms the reality. सावन का महीना चल रहा है, कभी मंदिर गई? नहीं, मैं तो नहीं गई हूँ। वो सब लड़कियाँ जाती है ना। हाँ। सबको व्रत होता है तब, तो नहीं जाने देता है अंदर किसी को। अच्छा। मन तो आपका भी करता होगा कि उनके साथ जाओ, अंदर बैठो। लेकिन जाने नहीं देता है तो। The same unease lurks in every village here in Gujarat and across the country. Dalits avoid temples over fears of a backlash. Mangal, a Dalit in Mehsana's Morwa village, he hasn't gone to a house of worship since he was born. आप इस गांव में जो मंदिर है, कितने समय से मंदिर गए हैं या नहीं गए? मंदिर में कोई दिन जन्म से ही नहीं गए। नहीं गए? नहीं गए। क्यों राम नहीं के गए? क्यों नहीं गए? राम के तो बहुत वो बीसी का प्रणाली का चलती है कि जाने से कोई विवाद होगा, कोई टसल होगी, इसलिए नहीं जाते। अच्छा। अरे ये टसल ना होवे तो इसलिए क्या करना, प्रेम से सौदा कैसे हो, झगड़ने विवाद करने नहीं होगा। Mangal tells India Today's special reporters that no one from his Dalit neighborhood has ever visited a temple, fearing for their lives. Local temples confirm that Dalits themselves stay away from these holy shrines. दलित वगैरह तो नहीं आते? नहीं, दलित नहीं। वो अपने जो संस्कृति में परंपरा चल रही है, ये अपने पुरातन है, अपने संस्कृति जो रखा है वैसे चल रहा है। अपनी जूनी संस्कृति लोप हो गई, लेकिन कई गांव में ये सभी अभी रखा है। दलित लोग कोई तो इस गांव में दलित तो होंगे? दलित है, उनको कैसे रोकते हैं? वो उसको काम नहीं, ये लोग आते नहीं, उसको मालूम है भजन करना। So the Dalit ban, as this priest insists, is a custom that's religiously followed in Gujarat. Lower castes honor it, apprehending trouble. The priest then concludes this ancient practice is impregnable. The poor and the prosperous Dalits comply with it alike, he claims. प्रवेश करने का ऐसा कोई नहीं, उसको निषेध है, कोई निषेध नहीं। अच्छा, कोई भी एजुकेशन है, यहाँ का दलित लोग है, बड़ा ऑफिसर है, तो वो भी नहीं आते? नहीं, गांव में आते तब उनकी जी उन्हें अपनी परंपरा है, उनको भी छूटा नहीं है, शहर में तो छूटे भी नहीं। It's the same practice at this temple in Votha in Ahmedabad. Dalits remain withdrawn. बिल्कुल नहीं। और दलितों कोई नहीं आने दिया घर वालों आता है। और दलित कई बार अगर आ जाते हो तो कई बार आ गए वो अंदर में भी आ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर तो किसी को नहीं, किसी को बाहर से दर्शन करें। Over the decades, Dalits in Gujarat have passively surrendered to the self-declared monopoly of upper castes on faith. But this isn't only Gujarat's story, it's right across this country. An unpleasant truth of one state's success story where the downtrodden have remained under the thumb of dominant castes as ever in Gujarat and everywhere in India. With Arun Singh and Amit Chaudhary across Gujarat,
This is India Today's special investigation team.